हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज है एंड मैं इस बार यूपीएससी में 713 रैंक पाके इस बार आईपीएस अलॉट हो चुका हूँ। आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी। सो माय जर्नी इन यूपीएससी has been rather unique like everyone else's, but it didn't start off as a childhood dream. मेरा बचपन का सपना नहीं था कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, पर जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं एनजीओज़ के साथ काम कर रहा था। तब मेरे मुलाकात होती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ऑब्वियसली पता चला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और कैसा काम करता है और हायरार्की कैसा रहता है एंड एक लोगों का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, ये मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब मुलाकात होती थी एनजीओ में, मेक अ डिफरेंस और प्रोजेक्ट रीच आउट और केयर फॉर एनिमल्स, तब मेरे को ये जानकारी हुई कि हाउ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ रन। पहली बात तो वो है। देन ग्रेजुएशन के बाद मैंने कैंपस प्लेस हुआ मैंने। आई एम आल्सो सीइंग द कमेंट्स। प्लीज़ आप कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, वो आप पूछ सकते हो अभी। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद डेलॉयट एक कंपनी है, इट्स अ बिज़नेस एंड ऑडिट्स कंपनी। मैं एक बिज़नेस एनालिस्ट के तरह उधर कैंपस प्लेस हुआ इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एंड देन आई वर्क देयर फॉर 2 इयर्स एंड देन एट द एंड ऑफ 2019 आई स्टार्टेड माय प्रेप। तो मैंने ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिया था बिना प्रिपरेशन के। उसके अलावा ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, पर मेंस 11 मार्क्स से रह गया था। और इस बार बाय गॉड्स ग्रेस और पेरेंट्स के सपोर्ट और फ्रेंड्स के सपोर्ट से मेरा इस बार हो चुका है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर गॉड बिकॉज़ मैं ये बात आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आफ्टर क्लियरिंग इट्स ईज़ी टू एट्रिब्यूट एवरीथिंग टू हार्ड वर्क, योर ओन एफर्ट्स। इट इज़ ट्रू, 90% वो चलता ही है और पर वो 5% जो रहता है वो लक भी प्ले करता है। व्हाट काइंड ऑफ अ डे इट इज़, व्हाट काइंड ऑफ अ डे यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ अ डे योर एग्जामिनर माइट बी हैविंग इफ आई टॉकिंग अबाउट मेंस, एंड how you present yourself in the interview. So luck and also 5% of God's grace, because the questions that you have read coming, all these things. So I think somewhere the uncontrollable factors do exist in this exam because आप शायद जानते हो कि 2005 में एक वैकेंसी के लिए 300 लोग, 300 या 400 लोग अप्लाई करते थे, बट अब 1200 1300 लोग अप्लाई करते हैं फॉर द सेम वैकेंसी, फॉर वन वैकेंसी। तो बात ये है कि don't consider this as the sure short way because there is a bit of uncontrollable factors, but we have to focus on controlling the controllables, and the controllables here are up. You must have seen other videos as well, कि एक बेसिक का एक फंडा रहता है इसमें। तो बेसिक का फंडा क्या है? Syllabus, understand the syllabus. More than by hearting the syllabus and knowing it word to word, understand the elements that are there in the syllabus and what parts of that elements are really useful for you. I mean, why are they kind of syllabus ऐसा क्यों है? Why are we supposed to know post independence India? What are the key events that happened of history worthy that happened in the post independence India? So no, the you need to know the need of the syllabus. Once you understand the syllabus, then there are basic books. NCERTs है. You can start off with a newspaper for current affairs. Give some good chunk of time for NCERT. Divide your time between GS and optional. मेरा ऑप्शनल वैसे एंथ्रोपोलॉजी था और एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने का तरीका भी वही है। आई विल गेट टू इट लेटर, बट मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स आई वांट टू गो एज़ अ स्ट्रैटेजी वाइज़, राइट? सो आई यूज्ड टू डिवाइड द टाइम बिटवीन जीएस और ऑप्शनल। ऑप्शनल में कम देता था स्टार्टिंग, बाद में ज़्यादा दिया और क्योंकि आई वांटेड टू नो जीएस कि
how to cover all these topics. But I want to say that for covering the portions, I have not done anything extraordinary. I've covered the basic NCRTs, and after the NCRTs, I've cross-referenced them with PYQ and enough mock tests, especially for prelims. And then for mains also, I've only gone through PYQ. So there is nothing extra I did. But my approach थोड़ा different रखा. I mean, mothers would have followed this, but I will come back to the comments. First, I will just address the journey part of this thing, and immediately इसके बाद मैं comments को address करूँगा. तो इसी में शायद आपको ये आंसर मिल जाए. तो I started off with geography because you will know why certain events happen in certain place. आपको अगर geography monsoon का idea है, how the Britishers came to India, how basically the Europeans came to India, the advent of Europeans, Battle of Panipat, the geography of Panipat, or why certain people somewhere are they're genetically different or behaviorally different, their economy is different, north south, colder regions are seen as much richer, why, how did geography affect them, right? So मैंने पहले geography पढ़ा, उसके बाद history पढ़ा, because now I was able to understand geography is fixed. So geography को मैंने पढ़ा, physical, understood the phenomena, understood the area, how certain areas are certain ways. इसके बाद history, and this was taught to me by Ved sir, under whom I went to coaching in ORN. I was there for 8 months ऑप्शनल के लिए. तो इस तरह मैंने जीएस और ऑप्शन के डिवाइड करके ज्योग्राफी पहले, इसके बाद हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, आई कुड मेक अ होल, आई कुड कनेक्ट द डॉट्स. तो मेरा एक पूरा सर्कल बना. दिस इज द ओनली थिंग आई डिड डिफरेंट. बाकी सभी टेकिंग गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, हैविंग गुड नंबर ऑफ रिविजन्स, doing your basic NCRTs right, doing your PYQs again and again, being thorough with the syllabus. This is the name of the game. तो मेंस में दिस टाइम आफ्टर डेलॉयट आई वर्क देयर फॉर 2 years and started my prep. बीच में because I liked anthropology so much, I joined MSc also in anthropology. And then while doing that, I also, after my second attempt, जब मेंस नहीं निकला, तो I started giving other exams, and हुआ था SSC CGL, और एक और हुआ था IBPS शायद. और उसके बाद ये आईबी आईबी निकला, एंड आई वाज वर्किंग इन आईबी. मैं बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पोस्टेड था इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से. एंड देयर आई लर्न द स्किल्स ऑफ ब्रेविटी एंड प्रिसीजन, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा रहता है. एंड आई बिलीव दैट ऑल्सो हेल्प मी समवेयर, सो आई वुड लाइक टू थैंक माई कोलीग्स एंड माई सीनियर्स इन द डिपार्टमेंट एज वेल फॉर दिस. एंड उसके बाद इंटरव्यू में मेरे को इस बार 198 मिला है. तो व्हाट आई बिलीव हेल्प मी इन इंटरव्यू वाज, मेरे को कई सवाल आते हैं, लाइक पीपल फ्रॉम 12th आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. इवन इन फर्स्ट ईयर डिग्री दे आर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और दे आर इवन foregoing some of their college time to prepare for UPSC. But I believe that UPSC is important, and you should give all the attempts that the government has given you. But you have also have to invest some time to get yourself a well-rounded personality. Because what happens is interview में मेरा 198 स्कोर इसलिए मिला क्योंकि मेरा 3 जॉब एक्सपीरियंस था इसके पहले, एंड आई हैड अदर हॉबीज लाइक ट्रेक, swimming and running, and I was the captain of state level captain of handball in Mysore. So these things, so what happened is, even though the transcripts, I was reading a few transcripts, तो उधर करंट अफेयर्स डोमिनेटेड था. जब मैं गया उस समय ज़्यादातर मेरे डैफ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि डैफ में मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी था. सो इट्स नेचुरली क्यूरियस था उनको, ओ यू हैव वर्कड इन प्राइवेट आल्सो डेलॉयट, नाउ यू वर्कड इन पब्लिक आल्सो आईबी, सो गवर्नमेंट कंपनी, सो व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, ऐसे क्वेश्चंस. And why do you think, how can trekking help in eco tourism and conservation, things like this. And it was a very nice discussion. So what I would like to say is, keep your personality well rounded, and uh, though UPSC is not the end of the journey, always have a plan B. So I will now address the comments, and I'm only suggesting everyone to have plan B because I did the same. And it's not like I'm suggesting you uh, don't try to UPSC after a certain attempts. Give yourself 2 good attempts, and after that, be serious with your plan B as well. And after 2 serious attempts, you would have read enough, and your knowledge and know-how would be enough, and you would have figured out the exam enough
that you don't have to study the whole time for UPSC, right? You can give some time for work, and some 4 5 hours you can dedicate to UPSC. So now I'll be addressing the comments of you guys. Thank you. माय मेन सोर्स ऑफ मेरा मोटिवेशन का मेन सोर्स एक्चुअली जब मैं 8th to 10th बोर्डिंग स्कूल में था, तो मैं एक आश्रम में पढ़ा था, सत्य साई आश्रम में। एंड उसमें टीचर्स एक्चुअली दे आर वेरी डेडिकेटेड, एंड दे आर नॉट जस्ट dedicated teachers. They are full-fledged caring educators, and they played the role of our parents. And even though they had a family, they chose to stay with us, leaving the family life behind. We were their children, and to a point where they looked after us more than what we could imagine. And their dedication to service, and it's only later that I learned that all the teachers there were double graduate PhDs थे, और उनको बहुत दुबई में ऑफर्स मिला था ऐसा, पर स्टिल दे केम हियर। सो since then the seeds of service was sown into me. But my highest motivation came when I was in touch with administration during my work with NGOs, or when I was in Deloitte. I saw the real impact they can create, and real impact, just a few actions of the district DM or the district superintendent can create to enforce beautiful law and order and safety of the city, or the smooth functioning of the bureaucracy. स्टडी में कंसिस्टेंसी एक्चुअली देखो, यू शुड नेवर हैव गोल्स, यू शुड हैव सिस्टम्स। सो फॉर एग्जांपल आई कैन कीप गिविंग यू मोटिवेशन, एंड आपको हजार वीडियोस भी मिल जाएंगे, सो एवरी डे यू कैन वॉच अ मोटिवेशन वीडियो। पर वो थोड़ा इट विल बी अ फॉल्स एफर्ट, बिकॉज क्या होता है कि you will eventually run out. If the motivation is coming from outside, you will eventually run out. So it's usually advised that the motivation should come from within. सो क्लैरिटी रहना चाहिए कि क्यों करना है, एंड वॉट एवर इट इज योर रीजन, पर दैट रीजन शुड बी क्लियर. यू योर सेल्फ शुड नॉट बी लाइक, ओके अदर्स हैव टोल्ड मी, और अदर्स आर टेलिंग इट्स अ नाइस थिंग, सो लेट्स ट्राई. यू कैन ट्राई एंड लीव इट ऑल्सो, बट इफ यू वांट रियली डू इट, आपको क्लैरिटी रहना है, और वो रीजन जो कुछ भी हो, इट्स, I hope it's ethical, and I always recommend your reasons to be ethical, and that it should stem from the core. Me myself, I was having a very nice package, and Deloitte is a dream company. So basically, you can be here for anything, but I would really recommend, because for the kind of work it is, and just after the results, I'm just seeing and being exposed to. IPS officers, even in my previous department in the intelligence bureau, I've seen the kind of dedication and responsibility it takes. The pomp and glory you see is just for a few minutes. रहता है, results के बाद रहता है. Even I have attended more felicitations than I can count, and I've been really blessed, and I feel loved, and वो सभी अच्छा लगता है. और 3 4 दिन के लिए फ़ोन भी बजता ही रहता है. But that apart, that's just the outer layer. काम तो, असली काम तो behind the cameras किया, I mean not behind the camera, away from the cameras किया जाता है, and it's a very responsible job, and you should be up for it. And if you're up for it, and then motivation will come from inside. And don't set goals, set systems, as in this time you'll do this, not achieving a goal. Like, oh, I will study this much this day, I will study this many pages, that's a goal. But in order to achieve that goal, you have to have systems in place, as in you have a system of sitting in front of the book no matter what, for some hours, right? A system of doing another hobby. Immediately after hobby, there's a hook habit, right? Hook habit of reading some current affairs, a few pages there. तो ऐसा आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं. एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डोंट गो फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स. Results come slowly, and when they come very fast. So even this journey, right, UPSC, 4 years almost journey, but it's a thankless journey. Mains clear किया, उसके बाद वापस you have to write prelims. No one will be like, oh, great, you cleared mains, I'll give you a job, or you cleared you gave appeared in the interview, I'll give you a job. ऐसा नहीं होता है. तो थैंकलेस जर्नी रहता है, तो इट्स गुड टू कीप योरसेल्फ वैलिडेटेड. अगर ये सिस्टम्स, मतलब आप सिस्टम्स रखोगे, लाइक आई ऑलवेज विल वेक अप अर्ली, आई ऑलवेज विल स्टार्ट माय स्टडीज एट 8, एंड इट्स सिस्टम, राइट? दैट्स अ माइनर विन. आप 6 o'clock उठते हो, दैट इटसेल्फ इज अ विक्ट्री, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट यू थॉट यू विल. So have multiple avenues for success.
Don't have just one single UPSC मिला तो सक्सेस नहीं तो फेलियर, दैट विल यूजुअली लीड टू लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी। बट अगर आप मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ सक्सेस रखोगे, जैसे मेरे हिसाब में ये रूटीन सक्सेसफुल था। आई बी आई क्लियर्ड एसएससी सीजीएल अंटिल tier 2 and things like this, and in IB my training performance everything gave me validation, so ऐसे कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है वैसे। सर आईपीएस ऑफिसर के लिए कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? तो आईपीएस एज़ यूजुअली प्रेफ़रेंस वाइज़ रहता है ये एक्चुअली, इवन आईआरएस, आईएएस, आईएफएस एवरीथिंग। तो आपको कट ऑफ जो रहता है उसके अंदर आपको आना है और आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको बाँटा जाता है। और यूजुअली ये माना जाता है कि फर्स्ट आपके कैटेगरी वाइज़ से एक्चुअली मार्क्स आपको मैं बता सकता हूँ कि कितना आना है आपको वो। एक्चुअली इफ यू सी द कट ऑफ्स कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ्स आल्सो आपको पता चल जाएगा। पर यूजुअली आपको सेफली अराउंड 930 920 के ऊपर रहना चाहिए ओवरऑल मार्क्स। प सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे पास करें? सो वही, प्रीलिम्स इज़ नॉट ऑलवेज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ यू यूज़ योर रिसोर्सेज़ एज़ वेल। क्योंकि 2023 एक अनोमली ईयर था, पर अगेन वी सॉ इन 2024 वी सॉ द क्वेश्चन पैटर्न इन प्रीलिम्स रिटर्निंग बैक टू द ओल्डन टाइम्स। तो इसमें रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन रहता है। इट्स अबाउट understanding what the examiner is trying to communicate. UPSC only communicates with us not via Twitter or Instagram. It mainly communicates with us through previous year question papers. And in by doing this effectively, and कैसे करें PYQ को? Actually PYQ से होने के होते हैं क्या? बिल्कुल होता है। PYQ एनालाइज़ कैसे करना है, मैं वो आपको अभी इसके इसको मिला के बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे पास करें और पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करें। तो वही प्रीलिम्स के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज़ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यू। इट वांट्स टू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इट्स पीएम किसान, it wants you to know that who it's helping, with who are the beneficiaries, and how many what do you think can be the advantage, a futuristic nice advantage. Or the trap question here may be the installments of 3000, they'll be paid in installments of 3000, which is wrong. You just have to catch that, right? You just have to catch that and then you can eliminate. So what I'm trying to say is it's about being frugal innovation. You have to be creative, you have to make use of your resources, you have to pull in your uh, knowledge base from every direction, and nothing you read will go into waste. Because for example, ants who cultivate fungus, that question I'd answered because I had played a game called Ants on Android phone. So there's a colony that grows fungus, and then there is another colony that takes care of aphids. तो मुझे पता था कि ants का अंदर बहुत चलता है काम. So anything you do, try to gain things out of it, and that was a correct question. तो ऐसा ही रहता है. And armadillo, the ones who can roll up into a cocoon, that also I had seen by playing Sonic Hedgehog. That's a game on phone. So anything can be an avenue of knowledge in prelims if you use it. It's frugal innovation, jugaad, right? So it's, but jugaad doesn't mean that you're not tested for knowledge at all. There's a base set of knowledge जो आपको भी पता है if you have given a single attempt. If you have not, the basics book, like I said, basic NCERTs 6 to 12th, 6 to 8th you can read just once, 8 to 10th you should be thorough, and 11th and 12th you should revise again and again एनसीईआरटीज़, एंड देन द फंडामेंटल बुक्स आपको गूगल किया, टॉपर्स बुक लिस्ट यूपीएससी मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, इट्स द सेम पीएमएफआईएएस फॉर एनवायरनमेंट, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम रिसोर्स लिस्ट, मैंने भी वही यूज़ किया है। पर प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज़ करना है कि आपको मैं अभी एग्ज़ाम्पल्स देके बता सकता हूँ, पर अगर आपने अच्छे से देखा, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीइंग द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट ऑल्सो अबाउट व्हाट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट आंसर दैट यू डिडन्ट नो। अगर किसी का आंसर विजयनगर एम्पायर है, तो एक हिसाब से पूछे होंगे लाइक विजयनगर एम्पायर के बारे में, व्हाट आर द अदर फैसेट्स, व्हाट वर द, दे वुड हैव आस्क्ड द कैपिटल वाज एट हम्पी, तुंगा फ्लो अराउंड इट,
What are the other aspects that you can learn about the Vijayanagar Empire? Its influence in the Telugu region, its good greatest rulers, their works, literary works like Krishna Devaraya's works. This is how you analyze PYQ. And not just that, there's another level wherein you see the other options also. जो गलत options थे ना, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि next time किसको पता रिपीट हो जाए। पर किसी ने पूछा है कि PYQ से क्वेश्चंस रिपीट होता है क्या? बिल्कुल होता है। You can see, you can check out channels like IAS, PCS, Pathshala or other channels. The other toppers videos also, they would have shown you with the PDF and with the two questions side by side, बहुत रिपीट होता है। मतलब 6 5 6 7 क्वेश्चंस तो आराम से PYQ से हर साल निकल सकते हैं। And the other thing is, even the toppers or anyone will agree that they will also know only 30 to 40, maximum 45 questions, and that is not usually enough to clear the cutoff. But इसके ऊपर जो आप लिखोगे, we have to have clarity and वही जो मेथड्स है, फ्रूगल इनोवेशन, एलिमिनेशन हो जाए या एलिमिनेट फ्रॉम द बॉटम, कि व्हिच आर द थिंग्स दैट कैन नेवर हैपन, एलिमिनेट फ्रॉम देयर, एलिमिनेट फ्रॉम टॉप, व्हिच आर द थिंग्स दैट विल डेफिनिटली हैपन। उसके बाद यू विल बी लेफ्ट विद थिंग्स दैट आर लीस्ट लाइकली टू हैपन। देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट। और ये सभी करके प्रीलिम्स तो आसानी से क्लियर होना चाहिए। पर रियल गेम तो आपका मेंस में है। सो प्लीज बी मेंस रेडी। इट्स ओके टू नॉट बी फुल्ली मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, but you have to have had a good amount of time answer writing, a good amount of time brainstorming for essays, and a very solid understanding of your optional. सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? माय इंटरव्यू वाज वेरी गुड। मेरा फोरनून में इंटरव्यू था, दिनेश दसा सर बोर्ड का था। बट आई कुडंट गेट इंटरव्यूड इन द फोरनून सेशन, तो थोड़ा एंग्जाइटी हुआ था। और बोले थे ऐसा कभी नहीं हुआ है पर आपका हो जाएगा, और मेरा आफ्टरनून सेशन में रखा गया उसके बाद। तो मैं सुबह इंटरव्यू था, उसके कारण मैं ज़्यादा खाया भी नहीं था, एक कॉफ़ी पिया था बस। क्योंकि मैं ज़्यादातर लेट ही खाता हूँ ब्रेकफ़ास्ट 12 के बाद, 12 तक तो इंटरव्यू खत्म होना था। पर उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, आई वाज़ ऑफर्ड लंच देयर एंड अच्छा-सा जगह मिला, अच्छा-सा खाना मिला। मूड ठीक हुआ। उसके बाद व्हेन आई वेंट इनसाइड, दे सेड, "सॉरी फॉर द वेट।" आई सेड, "नो वरीज़ सर, आई गॉट टू हैव lunch at UPSC. It's a rare opportunity." And then I sat down. They asked me questions about my previous work experience, जो 3 कंपनीज़ थे, IB, Deloitte और Tech Systems। और उसके बाद जो जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू आंसर दिस। हेलो, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, 10 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್। ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ senior. तो उसके बाद दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट pros and cons of public and private this thing. They asked me a few questions regarding IB. They asked me a few questions for regarding my educational background. A few questions regarding my hobbies like trekking, biking, triathlon, etc. तो इट वाज़ लार्जली अराउंड माय डैफ, तो मैंने अच्छा सा आंसर दिया एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई हैव गॉट गुड मार्क्स दिस टाइम। एंड रिवीजन के लिए मैं क्या करता था कि किसी ने पूछा है कि आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा था? बाय माय रिवीजन एक्चुअली आई वाज़ वेरी पुअर एट इट, एंड दैट्स द रीज़न आई बिलीव आई डिडंट क्लियर द फर्स्ट 2 टाइम्स। पर रिवीजन के लिए मैं आई यूज्ड टू डू माय बाय द सेकंड अटेम्प्ट आई हैड मेड नोट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट नोट्स नहीं था मेरा। Second attempt I made small notes, that was also not complete, but my anthro notes were done. तो इसीलिए मैं कर पाया। So I always suggest make your own notes. Once you make your own notes, you'll be easily able to revise. You won't need a special strategy for that. Once you make your own notes, even for Lakshmikant, I'll tell you, read Lakshmikant, keep reading again and again. That's the revision. But आपको मॉक टेस्ट में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ के भी आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को आप लिख दो। मेक नोट्स ऑफ दैट एंड दैट विल रियली हेल्प यू। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सोर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए
पढ़े एंड कहाँ से पढ़े सर? So, science and tech economies are one of the few sections that are the dynamic part because history and geography are largely same. Polity and the governance structure remains the same, although the questions that can ask may have current affairs aspect in them. सो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक ऐसा चीज़ है जो बहुत डायनामिक है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट आई हैड डन श्रीराम आईएएस का इकोनॉमी and for fundamentals of science and tech I being a science student I was very sound in science and tech. I had prepared for my IITs also and that helped me in CSAT as well and but largely for science and tech I had done the 10th science book NCERT science textbook and that's it. I didn't do the 11th and 12th science book. But I did newspapers a lot and there are FAQ sections and comes and there's a separate science section that comes in Hindu. Particularly if you follow that. And there are a few channels like Cold Fusion TV, and Amit Sen Gupta for economy and geography. I did from Amit Sen Gupta. There are sleepy classes. They're also very good for economy. And whichever economic concepts you don't understand, like for example, you see the news and they say interest rates have been decreased because to fight recession or interest rates have been increased in the hopes to fight the growing inflation. Just try to come back to YouTube if you don't understand what's going on. Try to come back to YouTube and then see the relation. What is inflation? UPSC. If you type, you'll get some good videos and you can prepare like that. प्रीलिम्स पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए पास करने के लिए? प्रीलिम्स आपको पता ही होगा कि प्रीलिम्स का कोई फिक्स्ड मार्क्स नहीं रहता है. दिस टाइम इन 2023 आई हैड गॉट 90, 91 और समथिंग. कट ऑफ पर 75 गया था जनरल जनरल का. पर ऐसा ही है लास्ट टाइम 88 था मेरे को 89 मिला था ऐसा है. तो the cutoff usually varies. If the paper is largely easy, the cutoff may even go above 100, like we were seeing before, or it may usually hovers around 89 to 98. So if you keep your marks there in that range, you'll be good. But usually, something around 90 plus, 95 plus, just to be on the safer side, and you can easily start your mains preparation. इकोनॉमी सेक्शन तो मैंने बोल दिया है. Yes, so tell me three things to do daily, let's say for just half an hour so that. Yes, it's a very nice question. Someone has asked, Sir, I have around 2 years. So please tell me the three things you need to do daily. So please take it easy. This is the best way. The thing is, you should not always just do UPSC. And even if you just want to do UPSC, give 2 years of your time. उसके बाद आप कुछ कर लेना यार. Plan B. Start working even at the minutest level or write other exams, state PCS hai. This is my humble request that please don't, in the pursuit of UPSC, don't forget that you are a valuable contributing member of the society. So the three things that you can do daily is keep good track of the newspaper every day. See what the editorials are telling you. Look what the opinions are going around and cross check those opinions. The second thing is keep in touch with your NCRTs and your basic books, especially the static, because for your reading newspaper, economy and science and tech will be covered. And every day for the next, do these two things. And the third thing is do your optional. Choose your optional. You have time, so grab a few optional syllabus copies online and then cross check a few reference books online only and just read a few pages online and the optional should be decided on three things: ease of resource availability, ease of coaching availability, ease of scoreability. But the most important thing is how much you like it. Even at 10 or 10 a.m., 10 o'clock in the night, you should be able to study it. So that is how you can spend your time for the next 2 to 3 years. रिवीजन करने का मन नहीं करता है, रिवीजन के टाइम बहुत होने लगती है. या इट्स ट्रू. और जब हम रिवीजन समवन इज आस्किंग दैट ही गेट्स नो मूड टू डू रिवीजन, ऐसा ही रहता है एंड इट्स कॉमन. Even we went through the same boat. No one here is doing superhuman things, although there are a few toppers. They are amazing, but largely रिवीजन का मन नहीं करता है क्योंकि हमको लगता है कि हम यूजुअली वही चीज़ पढ़ रहे हैं. तो what you can do is instead of studying Battle of Plassey the second time,
आई मीन सॉरी, सेकंड थर्ड टाइम तो पढ़ना ही है। 4-5 बार पढ़ के अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, तो यू कैन जस्ट सी सम वीडियो on the Battle of Plassey, the Buxar, and how it gave the Britishers the key to the Indian Empire. So things like that. So just see a few videos, and you'll, if you're bored about reading Monsoon, see a video. They'll show it pictorically, and it's very amazing. So you can do that. So tell me. Uh, these are. To just half an hour. प्लान बी कब से रखना है? वही जैसे मैंने कहा, प्लान बी 2 अटेम्प्ट्स के बाद आपको प्लान बी शुरू कर देना है। 2 serious, honest attempts that you should feel, I have given my best. I have given these 2 attempts. The improvements I can do, for that I don't need another full days of studying anymore, because I've already given 2 serious attempts. तो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स नहीं, देखो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहता है। मेंस की वही बात है कि आपको जो लॉस और जो फैक्ट्स आप पढ़े हो, उसका रिपरकशंस क्या हो सकता है। सो यू हैव रेड अबाउट आरटीआई या हियर, व्हाट कैन हैपन इफ द आरटीआई इज डाइल्यूटेड। यू हैव रेड अबाउट इलेक्शन कमीशन हियर, what how does election commission ensure free and fair elections? So it's just a point of contemplating on those things. तो एनालिटिकल व्यू कैसे आता है, ये डिबेट से आता है, राइट। बिग पिक्चर अब सनसेट टीवी में इट कम्स एज पर्सपेक्टिव, and big picture actually was coming under Frank's channel Bharat Matters, Bharata First, but I think that's also stopped. But you will find many primetime debates, not the one news channel where they'll be shouting, but this real debates like big picture debates. That will really help you open your analytical mind. 2000 strategy. So 2000 strategy आपको this is the best time to start studying. Start off with your optional and GS together. And जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, वही फॉलो करना, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी। Give some time, give 60% of your time for GS, and give the rest to optional. And during your breaks, don't keep your newspaper study for in the study hours. Keep your newspaper study in the break time for the first 3 to 4 months, and then afterwards you incorporate it fully with a newspaper and a magazine. You should do current affairs thoroughly and try to relate it with static as much as possible. Do we have to study every page in detail from structural book search? देखिए, I don't have a separate Telegram channel, but I do have a Instagram channel under the same name. I will tell them to link my Instagram channel, सूरज के एल IPS करके है। तो उसमें आप जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स है उधर आप पूछ सकते हो। और सो टेलीग्राम चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम चैनल है। एंड वी डोंट हैव टू सी, वी हैव टू स्टडी एवरी पेज, राइट, ऑफ एनी बुक, but in detail or how big of a detail, that really doesn't matter, as long as you really understand what sequentially, chronologically, and in space and time, जिस जगह में उस समय क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो यू गेट द रेगुलेटिंग एक्ट, you'll understand the Britishers wanted to centralize power, you see, they wanted to keep things under control. Even the civil services, they wanted no Indians to be in the top position, so they created a separate group A, and then they kept everyone else in other groups, so that even after promotion they don't come there, because they didn't really trust us. You see this happening till 1833. Then you see they have recognized the growing dissentiment. Even back in Europe, they have been disenfranchised. East India Company, they have lost the monopoly to trade, and now they're starting to decentralize. And then you see it all break loose in the revolt. So ऐसा you have to understand it in chronology. You have to understand it spatially and temporally, and you should understand why certain things happen, and that would largely be enough for you to really understand spectrum. डिटेल बुक लिस्ट देखिए, मैंने भी वही रेफर किया है जो सब लोग करते हैं। इफ़ यू जस्ट गूगल टॉपर्स यूपीएससी टॉपर्स बुक लिस्ट, यू विल गेट इट। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड लिस्ट। एनसीईआरटीस रहेगा उसमें, स्पेक्ट्रम रहेगा, लक्ष्मीकांत रहेगा, थोड़ा सेलेक्टिवली नितिन सिंघानिया रहेगा,
थोड़ा सेलेक्टिवली पीएमएफआईएस का एनवायरनमेंट रहेगा। श्रीराम आईएएस का इकोनॉमी रहेगा। दिस इज द सेम बुक आई फॉलोड। फॉर एंथ्रोपोलॉजी आई रेड अ लिटिल बिट ऑफ अक्षत सर's book. That was at the last, but for starting I used basically coaching material from which I also took help of Level Up test series for my uh, successful attempt 2023 attempt. Hmm. Month wise, I'm working professional। आंसर कैसे फ्रेम करना है? एक मिनट। 2025 के लिए तो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है। तो आपकी सी सैट, देखिए सी सैट, एक सेकेंड। देखिए सी सेट के लिए मेरा कोई अलग सा स्ट्रैटेजी नहीं रहा था। तो आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटीज। सो मैथ वाज माय स्ट्रेंथ एंड सो वाज इंग्लिश। तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, बट ओवर द ईयर सी सेट बहुत मुश्किल हुआ है। 2023 में बहुत मुश्किल था सी सेट। सम ऑफ माई आईआईटी फ्रेंड्स वर आल्सो नॉट एबल टू सॉल्व इट इन टाइम। तो सी सेट के लिए मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएँगे of number systems and the basic probability and other questions. Please follow those playlists. And I would recommend after January to invest a half an hour every day till March for CSAT and then start giving tests. So this will help you with the CSAT. थोड़ा लंबा जा रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। तो सिलेबस मैंने बता दिया है, आंसर्स कैसे फ्रेम करना है। तो आंसर्स का स्टैंडर्ड मॉड्यूल ही रहता है। मैंने बता दिया है कि रिपोर्ट राइटिंग मेरे को बहुत हेल्प किया इस एस्पेक्ट में। And the template is the same: intro, body, and conclusion. But the main thing is you have to understand the demand. So it's not about framing the answer at all. सब लोग सोचते हैं कि चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, हो जाएगा काम। But main thing you have to do is understand the demand of the question. So I'll have to run really. मैं अब लबास्ता निकलने वाला हूँ कल सुबह। तो कंसिस्टेंसी मेंस और इंटरव्यू की यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता है इंटरव्यू में, तो आपको पता ही है किसी क्वेश्चन अगर ना आए तो आप सीधा सीधा ना बोलना है। इट्स नॉट एट ऑल अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्जेशन। आप उस स्टेज पे आओगे तो आपको ही पता चल जाएगा। तो 2025 का बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया है। तो आईपीएस का ट्रेनिंग बहुत आई डोंट नो हाउ इट विल बी। आई हैव हर्ड इट विल बी वेरी फन, एंगेजिंग एंड मल्टी डायमेंशनल। तो आपको ज़रूर अपडेट दूंगा मैं मेरा इंस्टाग्राम चैनल में, विच इज़ सूरज के एल आई पी एस। तो आप ज़रूर उधर फॉलो करना एंड आई विल कीप इन टच विद ऑल अदर डाउट्स, जैसे प्रमोशन और फेवरेट टॉपिक्स। तो एक और क्वेश्चन है कि आई एम रिलाइंग मोर ऑन सेल्फ स्टडी बट इट्स टेकिंग मोर टाइम एंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता ही है, क्योंकि uh, हमको लगता है कि कोचिंग से ही निकलेगा, बट ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट टेकन कोचिंग। जीएस का कोचिंग मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। मैंने सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी का लिया है, और एंथ्रोपोलॉजी का सिर्फ 5 महीने लिया है। तो इट कैन बी डन, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव अ गुड मेंटर और अ सीनियर हु कैन गाइड यू। You can ask questions from me also or any other topper, they'll help you out. Many have Instagram channels also, so they'll definitely help you out. डैफ बनाना इज़ अ लिटिल आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि वो इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट। तो आप उस स्टेज पे जब आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सर, हाउ टू टैकल मल्टीपल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद सी कॉलेज? तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपको बहुत टाइम मिलेगा डिग्री में। जैसे मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपको सेकेंड ईयर तक को आपको कॉलेज तो एंजॉय करना ही है, कॉलेज के इवेंट्स, इलेक्शंस
फेस्टिविटीज सारा फॉलो करना ही है। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आ जाओगे और आप प्लेसमेंट में बैठना नहीं चाहते हो, जैसे मैंने बैठा था, मैं प्लेसमेंट में गया था एंड आई वर्क 2 years इन प्राइवेट। But if you don't want to do that, then you can study that time. And if you're from humanities background, it's much easier. But if you're from science background like me, you can start off with YouTube videos because explanation is better. And once you see these NCERT explanation, like Amit Sen Gupta का आ जाता है explanation, और राजतनिल मैम का geography का आ जाता है, तो ऐसे if you see and then if you read it, it'll be much more useful for you. हर क्वेश्चन में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना ज़रूरी भी तो नहीं होता है। एग्जैक्टली तो मैं वही बता रहा था कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फ्रेम योर क्वेश्चन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन या चार्ट बना दो, ऐसा नहीं है। बट basic intro माने it doesn't have to be, you can continue with your answer body, but introduction माने to address the setup of the question कि हमको question समझ में आ गया है, वो बता सकते हैं आप introduction में, and that will be very useful for you. And in conclusion, you can conclude in a very positive way, which will bring the whole answer together. So that is why intro and conclusion will play a big role, but I wouldn't categorize them as intro and conclusion, very strictly कि होना ही है। बट हाँ, अगर है तो मेनी क्वेश्चंस होना ही है, एंड सम क्वेश्चंस अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट यूजुअली इफ इट्स देयर इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। तो मोए आपका बता दिया है मैंने, इंजीनियरिंग सेल्फ स्टडी इज़ इनफ, बिल्कुल। आप इंजीनियरिंग में सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जैसे मैंने ही किया था। मैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग भी था, एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक कोर्स, और हमारा कॉलेज भी स्ट्रिक्ट था, अटेंडेंस भी पूरा चाहिए था। एंड उसके बाद मैं 2 साल आईटी में भी काम किया, फुल फ्लेज एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट। तो उसके बाद मैं व्हेन आई वाज़ अराउंड 24 एंड अ हाफ इज़ व्हेन आई रिज़ाइन्ड एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उसके बाद भी 2 अटेम्प्ट देते ही मैंने आईबी का एग्ज़ाम निकाल के आईबी में काम करना शुरू किया था। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इफ आई हैव लेफ्ट आउट एनी क्वेश्चन, you can always reach out to me on Instagram. My name is the same, and you can ask any other questions now. I'm really I have to leave for another engagement. Have you followed physical and textbook or PDF format? No, I always study with physical copies. It's about because I make notes in that book itself. तो मैं लक्ष्मीकांत में ही नोट्स बनाया हूँ, तो स्पेक्ट्रम में भी वैसा ही किया हूँ। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट पीडीएफ में काम चल जाता है। एंड नाउअडेज स्पेशली ड्यूरिंग माय थर्ड अटेम्प्ट आई मेड यूज ऑफ ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज अ लॉट, बिकॉज दैट वाज वेरी हैंडी, बिकॉज आपको इधर-उधर जाना रहता है। फॉर एग्जांपल आई हैड टू स्टडी सम पार्ट इन दिल्ली एंड कम बैक हियर, माय एग्जाम सेंटर वाज हियर। तो एवरी टाइम बुक्स लेके जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्लीक लैपटॉप या ऐसे आईपैड ऐसे स्लीक जैसा रहता है ऑप्शन, so it's easier, and it's easier, more portable to carry as well, and you can store everything there. So I would recommend go for PDF formats now because it's well and good, pencil आ जाता है तो it's the same look and feel. Static subjects are very important than current affairs. That एक second. दोनों इम्पोर्टेंट है। आई कांट से दैट स्टैटिक इज इम्पोर्टेंट एंड करंट अफेयर्स इज नॉट, और करंट इज इम्पोर्टेंट, स्टैटिक इज नॉट। जैसे आप देखे हो, दिस टाइम इट वाज अ मिक्स बैग। सो डोंट बी लाइक मैं स्टैटिक, दैट्स इम्पॉसिबल। देन अगेन करंट से भी नहीं संभाल सकते हो बोथ, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। न्यूज़पेपर वर्सेस देखो, एक न्यूज़पेपर रहना ही है और एक मैगज़ीन बस, एंड दैट्स रियली मोर देन इनफ। एंड इफ यू हैव द टाइम and the consistency to even finish these two topics, which is एक newspaper every day, and by the time the next month completes, previous month का current affairs हो जाना चाहिए। मतलब अगस्त का करंट अफेयर्स सितंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। जुलाई का करंट अफेयर्स अगस्त एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। एक करंट अफेयर्स मैगज़ीन, एनीवन, आई नो देयर इज़ अ लॉट दीज़ डेज़, एवरीवन हैज़ अ वेरी नाइस मैगज़ीन। War and Mag, if you just take a stroll, you'll get it. Take just one and follow it throughout, because they'll make sure that they are not repetitive and they're covering new topics. But if you follow two, three topics may be repetitive and they both are not covering a few topics, so ऐसा भी हो सकता है। तो having said that,
हाँ, हाँ, गेट खोल गया क्योंकि अभी जाना है एक्चुअली निकलना है मेरे को। ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। लबासना का ट्रेनिंग वीकेंड में रिपोर्ट करना है हमको। और मैं फ़िलहाल अभी घर में ही हूँ और पैकिंग वैकिंग की तैयारी चल रही है, पर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द फ्यू स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग दिस बिकॉज़ ये जर्नी ऐसा ही है कि कोई सेलेक्ट होके ये नहीं कह सकता है कि आई गॉट सेलेक्टेड ओनली बिकॉज़ ऑफ माय हार्ड वर्क। लक और गॉड्स ग्रेस का एस्पेक्ट रहता ही है। सो आई वांट टू हेल्प एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल। नॉट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और न्यूज़पेपर। देखिए एनसीईआरटीज़ का ज़्यादा नोट्स तो मैंने नहीं बनाया। जस्ट फ्यू स्टैंडर्ड्स बुक्स में मैंने वही उस पूरे पेज में 1 या 2 पॉइंट रहते थे जो याद रखने वाली है, तो मैं उसी पेज में लिख देता था। मैं सेपरेट ऐसा नोट्स नहीं बनाया, बट आई डिड मेक फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड दैट हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माय मेन्स। तो नोट्स एक्चुअली वही मेरा नोट्स मेकिंग वाज़ माय वीकेस्ट एस्पेक्ट। तो नोट्स मैंने बुक में ही बनाया और मैं पीवाईक्यू के एनालिसिस में नोट्स बनाता था और जो मॉक टेस्ट देता था, उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग आते थे, उसमें वो मैं नोट्स में लिख देता था या एक ए4 में लिख के वो उसका बंडल था, मैं बंडल ऑफ मिस्टेक्स करके बुलाता था मैं उसको। हाँ, तो इंग्लिश को बेटर करने के तरीका ये बता दीजिए। सो फॉर इंग्लिश इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू रीड मोर एंड मोर बुक्स। बुक्स इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। जैसे ये बुक मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ, मेथड इन मैडनेस, एंड दीज आर वेरी नाइस बुक्स एंड सच बुक्स लाइक these are the other books that I studied for my mains. One is Getting India Back on Track, very nice book. Then the other book is Reimagining India. So, by reading books like this will definitely help. It's like the India way. It's all about reading. The English also is like any other subject itself. Subject की तरह लेके आप अगर पढ़े ज़्यादा बुक्स पढ़े तो आपका एक्सप्रेशंस और आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होते रहेगा। तो वैल्यू एडिशन तो मैंने ऐसे बुक से ही किया है जो मैंने आपको दिखाया। आई डिडंट हैव एनी अदर स्पेशल सोर्सेस फॉर वैल्यू एडिशन। यूपीएससी के लिए यूज़फुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स कौन-सी है? वेबसाइट्स तो एवरी मिनिस्ट्री का वेबसाइट जो आप जानते हो, वो वेबसाइट इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू नो अबाउट एनी पॉलिसी दे आर इम्प्लीमेंटिंग। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस P365 स्कीम्स, सिर्फ आप वो एवरी मिनिस्ट्री का वेबसाइट जाके रोज़ एक मिनिस्ट्री का वेबसाइट 10 मिनट देख लिया तो काम हो जाएगा। तो मोटिवेटेड वही मैं पहले बता चुका हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, द ड्राइव शुड बी इनसाइड। आपको सिस्टम्स, आपको आइडेंटिटी चेंज करना है कि यू डोंट लाइक जैसे स्मोकिंग का एग्जांपल बता दिया है। तो व्हेन यू क्विट स्मोकिंग यू डोंट हैव टू एड्रेस सेइंग आई क्विट स्मोकिंग, राइट? दैट मीन्स यू आर स्मोकिंग एंड यू क्विट स्मोकिंग, बट देन यू कैन स्मोक अगेन। The real thing is, what I'm trying to say here is, your identity, self identity should be I don't smoke. So that is a different identity than saying I quit smoking. So ऐसा ही आपको आइडेंटिटी में ही आपको मोटिवेटेड रहना है। सो योर आइडेंटिटी इटसेल्फ शुड बी अ ड्राइव फैक्टर फॉर यू दैट दिस post is something that I really want to have, this job is something I really want to do and I want to do nothing else. तो आपको वो ड्राइव अगर आपको अंदर है तो आप मोटिवेटेड रहोगे। एनालाइज प्रिया में वगैरह बिल्कुल मैंने पहले वो someone is asking that have you analyzed pre or means PYQs? I've addressed this in the earlier part of the video of how to analyze also, you can look it up. तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई विल एंड this live session. Thanks a lot for having me here and giving me this opportunity. I hope it helped a few people. And even if there are others who missed this session, I would request you to please get in touch with me on Instagram. I'm helping everyone out. We have a small community of around 18 to 20 students who I'm in touch with regularly, and they're doing great. But it's not like I'm running any mentorship. अगर आपको कुछ डाउट्स है और अप्रोच के कुछ गाइडेंस चाहिए और अगर मुझे वो पता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, डेफिनेटली नो मिसगाइडिंग देयर।
and you can reach out to me anytime. Okay. Thank you for having me. Namaste.